How does divorce affect a man, and what's your relationship with your ex-wife now? I am dating my ex-wife right now. What is your take about the entire Bollywood outsider and nepotism? It's not like nepotism doesn't exist anywhere. It's private enterprise यार. वो अपने पैसे से प्रोड्यूसर किसी को भी लेके बनाए. गवर्नमेंट का जॉब नहीं है ना कि यहाँ पे आरक्षण है. DMs किस टाइप के आ रहे हैं? तो पहले नंगी तस्वीरें भी भेजते थे. आजकल नहीं आ रहे? अरे मैं प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे सब मैसेज करता था तो बंद हो गया. तो पहले आप ये पिक्चर्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे? वही है कि देखो, इट्स वेरी नाइस, आई फील फ्लैटर्ड एंड ऑल दैट, बट देन प्लीज. Are you the most posh guy in Versova? I am Versova का Versace. भिवंडी का Balenciaga. दादर का Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Kamathipura का? What is the weirdest thought you've had when you're sitting alone? What is the best way to kill oneself? Today's conversation with Gulshan Devaiah was a very different conversation, जो हम usually हमारा चिलार podcast episodes का नहीं रहता है, but this was something where we deep dived into nepotism and we deep dived into culture and bunch of other topics. We spoke about his divorce and how he's dating his ex-wife right now, which is a very different scenario from what we see on the internet. But yeah, this is a very different conversation that I had. बहुत ही interesting. हो सकता है उतना फन वाला एंगल ना हो जो आपको रेगुलर चिलार के एपिसोड पे मिलता है, बट स्टिक अलोंग क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है. प्लीज वॉच द एंटायर एपिसोड. चीयर्स. इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टे इन बॉम्बे? Right now, yeah, sure, yeah. I'm working here, right? So yeah, my life is here right now, and I still have things to do here. So I don't seem to be interested in anything else. So the film industries and the entertainment industry is based out of here, so it's practical to stay here. So yeah, I mean it's a better city in many ways than any other city, and it's also worse in many ways. How is it better and worse? Mumbai, it's you can do things over here which you can't do. People don't really bother too much. आपको एक स्पेस देती है सिटी, आके ये स्पेस है आपका, इसके साथ क्या करना है आपको देख लेना, आपकी क्या क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड इट इज़ ट्रू दैट इट्स रिलेटिवली सेफर, एज इन देयर आर, ऐसा नहीं कि चोरी चकारी और ऐसे ईव टीजिंग नहीं होता है, बट इट्स रिलेटिवली मच लोअर देन अदर सिटीज़. एंड वो ये स्पिरिट ऑफ मुंबई के बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं, बट देन या इट फंक्शंस मैन, लाइक इट्स बीन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स बट स्टिल इट फंक्शंस, इट रियली फंक्शंस. हाउ इज इट वर्स देन एनी अदर सिटी? क्या कहते हैं वो, जो infrastructure is terrible for the city, which is so important for the Indian economy, and it's a major port. Infrastructure is terrible. Even the airport is a single runway airport. I mean, it's just ridiculous. Flights कितनी delay होती हैं यहाँ पे because it's a single runway, and the infrastructure is terrible. It can't handle the amount of people that are there. It's constantly under construction. And also, yes, and I think this is a thing that I have. It could be a little politically motivated also because of the elections coming up, और अभी BMC के elections भी आ रहे हैं और आगे I think assembly elections भी होंगे. So I think a lot of these permits for redevelopment and all that, तो जो एरिया में मैं रहता हूँ तो बहुत सारे बिल्डिंग सडनली एक साथ redevelopment में चले गए. उसके लिए आपको permits चाहिए होता है. तो मे बी इट्स जस्ट कि सबको खुश रखते हैं करके. एंड आई रेड सम आर्टिकल समवेयर, इट सेड दैट सम more than 11,000 private construction projects are happening in Bombay, which is outside of what the governments are doing, as in like जो government departments होते हैं जो रोड की खुदाई वगैरह मेंटेनेंस वगैरह करते हैं. Correct. उसके अलावा इतने सारे other constructions are happening. It's quite a bit, और इतना डस्ट और ये हो जाता है ना. तो वही है कि जो पुराने घर में रह रहा था वहाँ पे खुद बिल्डिंग की मरम्मत शुरू हो रही थी और इर्द गिर्द भी वैसे बहुत धूल मिट्टी हो गया था और मुझे थोड़ा जीना आराम हो गया था. It's really, it's harmful, like cement dust is not really good for you to breathe. तो इतना सब construction हो रहा है तो वो आप inevitably वही breathe कर रहे हो ना. आप कितना भी लगा लो खिड़कियाँ बंद करके AC और air purifier, you will be exposed to it at some point of time. So it's irresponsible a little bit from the authorities side. They must have, but
अब यहाँ पे सब लोग, हम लोग अपने फ़ायदे की सोचते हैं, वो लोग अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं. तो there's a lot of give and take in the city. डेफिनेटली कैन बी बेटर. इट्स अ वंडरफुल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. इफ वो इम्प्रूवमेंट आ जाए तो जो कोशिशें चल रही हैं, मे बी दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस construction things and all are happening, because they want to develop this into a nice city. I mean, it's always been an important port city even before independence. So at least after independence, the quality of life in this city and the infrastructure should have been world class. Correct. For that matter, lots of things in this country should have been world class, but it's not, for whatever reasons. So फिलहाल मुंबई की के बारे में बात कर रहे हैं. Quality of life is terrible. If you take economies which are like much weaker economies than India, the quality of life is much better, because these things matter to them. Now there are a variety of reasons why these things, because of the population, because of political instability, because of the amount of diversity we actually have. So all of these things can sometimes get in the way of things happening. कि आपने किसी को कुछ बना के दे दिया और उनको बना के दे दिया, हमको नहीं बना के दे दिया. ये मैं बोलता हूँ सोसाइटी के विंग्स में होता है कि ये विंग से इस बार सेक्रेटरी बने कोई, तो उनके विंग में मरम्मत करवा ली उन्होंने, लिफ्टें ठीक करा ली उन्होंने, वाटर टैंक पे ऐसे क्या कहते हैं लीक प्रूफ बना लिया उन्होंने, लेकिन उतने में पैसा ख़त्म हो गया और बाकी विंग्स का करा नहीं पाए. तो फिर वो वाले बोलते हैं कि हम लोग हमारे यहाँ ये सेक्रेटरी बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे. तो फिर वो ये चलता रहता है. तो देश का भी ऐसा ही है, आई थिंक more or less कि ऐसा ही चलता है. There's a lot of this factionalism, and unfortunately I don't think we really know what it is to be Indian, भारतीय. अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा बोल दिया इसका मतलब नहीं मैं कौन होता हूँ. नहीं, आप होते हो, citizen हो, but मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक है, because it's such a, it is an umbrella term actually ना, तो भारतीय, because there is so much diversity. देखो मैं कर्नाटक से हूँ. कर्नाटक में एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ भी नहीं कह सकते, हिल्स, जो उसको कोडगु बोलते हैं. तो मैं वहाँ से हूँ. हमारी भाषा अलग है, खाना थोड़ा अलग है, रिवाज अलग है. जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह कोई पंडित नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्ग कराते हैं, और दिए की पूजा करते हैं, ज्योति की पूजा करते हैं हम लोग, ज़मीन की पूजा होती है, रिवर कावेरी की पूजा होती है, शस्त्रधारी है हम. सो वी आर लाइक अ मार्शल रेस और समथिंग लाइक दैट. बट वो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है. तो ये हमारी कम्युनिटी है. तो बाकी सारे जैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारा हो गया हिंदू, बट देन दैट्स नॉट सिमिलर टू अदर हिंदू कम्युनिटीज़ हु आर क्लोज बाय ओनली, जिनके यहाँ शादियाँ पुरोहित कराते हैं. करेक्ट. सो why are we not like Bhartiya? So, but that's the thing, na, that's the uniqueness of us being Bhartiya, that we have so much diversity. Yeah. But that's also the bane of our, this is just my opinion. I was like, can we just like be curious about each other's culture and be cool with it and really enjoy and embrace this diversity? So I guess not. Do you think we're not opening up to a lot more cultures? Do you think that the problem is westernization of a lot of things? नहीं, वेस्टर्नाइजेशन का वो है अभी, वो पहले से था. वो इतना हो गया कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव आर क्वाइट वेस्टर्नाइज्ड. लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी assume to be Indian also like are quite westernized, but that's okay. Like if you look at some like there is nothing wrong in adopting something and then sort of making it your own culturally also. So day-to-day things जैसे railway system हो गया, electricity, a lot of those things are like were invented by Western things which we all use, and I don't think we should really fuss about it. Going ahead, what can we do with those things जो हमारे disposal पे है, इसको लेके क्या कर सकते हैं? I think इस पे focus होना चाहिए. First time in India के अलावा first time in the world हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ पे focus होना चाहिए. And I feel that वो क्रिकेट मैच के टाइम पे आ जाता है कि हम लोग अपने डाइवर्सिटी सब वो बुला के हम लोग एकजुट हो जाते हैं. Okay, what are your potty thoughts? My potty thoughts. Yeah. I used to do great podcast, guys. What a start. I used to, like, you know, before I joined the business, the entertainment business, even after that also, I used to practice doing interviews. I still do sometimes. Sitting on the pot. Yeah, that's because I really found it difficult, शुरुआत से, to just be myself and relax and express my views and be comfortable being myself as Gulshan. Okay. I was really comfortable playing characters, and to some extent, the early part of my career, I think I was more comfortable hiding behind my characters, and I was not very comfortable being myself. I am now, and I think
a large part of it is all of this practice I've been putting for How do you about practice? 20 years. I just imagine situations and questions. और मानो किसी का इंटरव्यू देख लिया मैंने, हाँ, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो धोनी को इंटरव्यू दे रहा है. I'll take those same questions and see how I'll answer that. okay. I'll just imagine things. It's all happening in my imagination. मैं ऐसे को play act out नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, imagination में है. It's not like you're voicing it out or what would you say? Sometimes I think my wife used to say, "What did you say?" And I might have just said something out loudly because मैं इतना indulgent हो गया था उस चीज़ में कि मैं actually said something and she was like, "Are you talking to me?" I said, "Oh no. What was it?" No, nothing. I was just. I'm too embarrassed to say that. I'm just practicing giving interviews. Where is this accent coming from? From the UK. Yeah. Why? I don't know why. Just like, because there's a Union Jack on the phone. Okay. What accents can you pull off? Other accents? None of them actually. Like This is a good one. Can you like? Are pick you up an the expert phone? on accents? No, I'm not. But you're not an expert on accents, so you have no. I don't think I can pull off any accent. अरे भाई, गुलशन If it's मैंने डांट convincing, दिया then I think people maybe at that point of time I'm convincing. But ऐसे तो मैं तो जेब में accents लेके नहीं घूमता हूँ. Sometimes for certain things I learn how to do it. जैसे दहाड़ के लिए हम कर रहे थे तो they had standardized the language. राजस्थान में based है, characters राजस्थानी है. So they had provided us a dialect coach, an accent coach. So I made full use of that. So I made friends with him and बैठ के हम लोग बात करते थे, script पढ़ते थे. तो वहाँ पे I had to learn how to sort of do that, and to some extent it really helped me. क्योंकि मैं I'm from the south ना, so I'm a lot more familiar, phonetically familiar to the southern languages. So it's not so familiar for me. हालांकि मैं हिंदी फिल्में देखते देखते काफ़ी बड़ा हुआ हूँ. तो but I'm not really familiar with the dialects and the differences between say those regions. जिसको the Hindi belt कहते हैं, the Gangetic belt, you know. तो उतना familiar नहीं हूँ. तो when somebody, so then I sit with them and listen to them कि अच्छा ऐसे होता है. So listening is very important, at least for me, to be able to do things. ये तो ऐसे तफरी में ये मतलब 2-3 बार जो इंग्लैंड जाके 2-3 बार नहीं, एक ही बार गया हूँ. तो मैं ऐसे थोड़ा ये दो बार गया हूँ इंग्लैंड. अच्छा, एक बार कर लेते हैं. Like what if Rishi calls you? Yeah, I'll just pick up the and phone. Is talking to you about Bad Cop. Yes, good afternoon, Rishi. Yes, it's afternoon here. Yes, you're 3.5 hours behind us. Behind, that's exactly right. 4.5. Behind us. 4.5. I'm corrected. I stand corrected. 4.5. What can I do for you, Rishi? No, I cannot help you, Rishi. You're a foreigner. No, you're not Indian. No, you're of Indian origin. Yeah, but you're not Indian. You're the PM of the United Kingdom. Yes. No. Yes, your father-in-law is Indian. Yes, he is. He's a great man. We admire him greatly. Yes. No, we cannot help you. You're on your own, buddy. Yeah. Biden, I'm sorry. You'll have to talk to him. Yes. Yeah. Netanyahu, don't get me started about that geezer. All right, bye-bye. Well done, yeah. I want to talk about Bad Cop. Okay. Talk to us about what the show is about. The show is about twin brothers. The protagonists are twin brothers. And then the antagonist is Kasbe, played by Anurag Kashyap, who is not generally known as an actor, but he can also act. He understands the craft, but he's not particularly interested in having a career as an actor. But वो थोड़ा शौक के लिए कर लेते हैं. थोड़ा टाइम मिल जाता तो कर लेते हैं कुछ लोगों के लिए, हर किसी के साथ नहीं करेंगे. But he has some emotional attachment with some people, and in this case one of our producers, Leena Tandon, is an old friend of his, so she asked him to be part of this, and then I and Saurabh Sachdeva is also there, who's a wonderful actor, and recently he's captured everybody's imagination from Animal, when his part in Animal. एंड आई थिंक वो मिर्ज़ा नहीं इसमें थे वो पहले. मैंने पहले देखा था उनको आई थिंक नेटफ्लिक्स पे वो सीक्रेट गेम्स. सो एंड देन ऐश्वर्या सुष्मिता, another actor whose work I was not familiar with. She's also part of this show, who I think was famous for being in the Kingfisher calendars. But she transitioned from her modeling career to an acting career, and I think she's relatively new, but then she's quite a striking-looking, beautiful young lady. And Harleen Kaur,
जो कोहरा में उन्होंने काफ़ी उधम मचाया था. Of course. Yeah, very popular show and people really appreciated her. So she's also there. So I got to act with all these wonderful people. You're playing a double role? I play a double role, yeah. So I have to change clothes twice. And hairstyles also. Happy with the show? I have not watched the show, but I was really happy with the experience of being part of this story, Because जब हम दहाड़ की promotion कर रहे थे, तो people used to ask me about the cop. And that cop is a job. Cop is a job, it's not a personality. But the filmy cop is a personality. But वो रीमा काकती की sensibility थी, जो टाइगर बेबी बना रही थी, वो realistic दुनिया है. It reflects reality. Although it is fiction, the characters are fictitious, but they are based in reality very much. And it has to be like that. Only then it will be believable. But अब रोहित शेट्टी की फिल्मों में कॉप ना वो रियलिज्म के लिए नहीं देखते हो आप. आपका अलग रीजन मज़ा आता है. एंटरटेनमेंट के लिए है. वो कैरेक्टर्स कैसे हैं. अतरंगी है. सिम्बा और सूर्यवंशी में क्या डिफरेंस है. बोथ आर एंटरटेनिंग बट दे आर डिफरेंट. Singham himself is different. So I'm just giving a popular example right now. I could also say Zanjeer ka Amitabh Bachchan. But they're all filmy cops. So there is a trope. It's a trope. So where it sort of is a personality. Not exactly, but sort of is a personality. So for that uniform means something. So I got an opportunity to do that almost immediately after playing a cop which is very much based in reality. Correct. उसमें cop personality नहीं है, job है. इसमें cop थोड़ा पर्सनैलिटी है. समझ रहे हो. करेक्ट. हाँ. सो आई वॉज फैसिनेटेड कि मुझे दोनों करने मिल रहा है यार. तो एज इन सो आई रियली What's the kind of difference you felt doing both? Starkly, because I'm serving a different sensibility here. I'm serving a different sensibility. My understanding and my output में ही वो है ना. The truth is different. The believability is different because उसका logic और इसका logic अलग है. आदित्य दत्त का स्क्रीन लॉजिक और रीमा काकती का स्क्रीन लॉजिक एंड रुचिका ओबेरॉय आल्सो वाज अनदर डायरेक्टर. उनका स्क्रीन लॉजिक अलग है. वेरी मच बेस्ड इन रियलिटी इन द वे वी परसीव थिंग्स. सो यू कैन वेरी वेल एनकाउंटर सच अ पर्सन इन रियल लाइफ एंड यू कैन से इट्स अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ पर्सन हु हैपन्स टू बी अ पुलिसमैन. दिस इज नॉट. इसका लॉजिक इधर का रियलिज्म इज विद इन द कन्फाइंड्स ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द स्टोरी टेलर. सो आदित्य दत्त's रियल एंड आदित्य दत्त's लॉजिक इज व्हाट ही मेक्स अप इन हिज वर्ल्ड. तो थोड़ा सा वो फैंटेसी, वो हाइपर रियलिस्टिक ये है. इट्स नॉट बेस्ड इन रियलिटी. तो यहाँ पे पुलिस वाला अकेले जीप लेके जाएगा. उधर नहीं हो सकता है बिकॉज वो दैट्स नॉट द प्रोटोकॉल. इंटरेस्टिंग. उधर उनको रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है, पेपर वर्क होता है. इधर कुछ नहीं, बोल दिया यू आर अरेस्टेड तो अरेस्टेड. हाँ. बिना वारंट के बस अरेस्टेड तो अरेस्टेड. नहीं है, उसको लेके प्लॉट पॉइंट्स है बट मैं पॉसिबल है. यू डोंट गेट इनटू ट्रबल. आप ये नहीं होते हो तो हाँ, वहाँ पे यू गेट इनटू सीरियस ट्रबल इफ यू डू समथिंग लाइक दैट. सो थिंग्स लाइक दैट. तो सो देन आई हैव टू सबमिट माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट दैट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस शो. करेक्ट. ये कहानी में ये रियलिटी है, तो मुझे उसको सर्व करना पड़ेगा. अब मैं अपना लॉजिक डालूंगा, उधर का लॉजिक, देवीलाल का लॉजिक यहाँ पे मैं करण पे डालूंगा तो वर्क नहीं करेगा. ये कुछ भी सेंस नहीं बनेगा. आई हैव टू सबमिट माई सेल्फ. सो द फन फॉर मी टू बी एन एक्टर इज दैट आई कैन डू एक्सप्लोर समथिंग लाइक दैट एंड आफ्टर दैट डू द ऑपोजिट एंड ऑफ इट. एंड ऑल्सो सो दैट वॉज फन. दिस इज ऑल्सो फन एंड दे आर डिफरेंट. तो ये करने मिल रहा है यार. तो आई कॉन्ट रियली complain. It's fascinating. Like this is why I'm an actor, because it's enormous fun. If I remove the money angle from acting, would you be still doing the same? Sure, I would do something else for money, but I was like मैं जब बैंगलोर में थिएटर करता था तो I was not doing theatre for a livelihood or something like that. I was making money outside of it. I was in the garment business. I was a designer and people used to hire me. So obviously the creative field में arts में ही था मैं. तो but my source of income for my livelihood was not acting. Why do you shift to acting for source of income? I just wanted to be a professional actor. It's a childhood dream, to put it really bluntly and simplistically. Acha.
I fantasized about being in the movies from a Who did really you who did you like idolize growing up? I idolized everybody. I liked everybody. There was a phase when I was fully Shashi Kapoor. I think the first thing I can remember, मैं बहुत छोटा था तो I think my mom and dad were, my mom was more like Rajesh Khanna, but I think I was Shashi Kapoor because he was very sweet. He looked like a nice man with a beautiful smile and all those things like that. And I think he usually played nice good people. So I think मुझे अच्छे लगे कि हाँ ये अंकल अच्छे लगते हैं मुझे. I have performed in front of him also, and which is मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया है. When was this? First time was 2006. Okay. मेरी तो थी गुरु क्योंकि पता नहीं था. अब बात स्टेज कर पे रहे हैं. हाँ वो पृथ्वी स्टेज पे ना वो 3 बजे का शो देखते हैं. तो they put a chair for him and separately a yellow chair, and he sits in white kurta, white pajama, white hair. And of course, he had put on a lot of weight, and he wasn't as handsome and beautiful as he used to be. But he was still quite the magnetic personality, a larger than life personality थे वो. तो एक तो आई थिंक बता देना चाहिए जो पहली बार पृथ्वी स्टेज पे जा रहे हैं तो 3 बजे के शो में कपूर साहब बैठते हैं. ये वार्निंग दे देना चाहिए. करेक्ट. तो मैं तब यहाँ नहीं रहता था, मैं बैंगलोर से ट्रैवल करके आया था. तो हमारा एक थिएटर ग्रुप था, हरामी थिएटर. मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके साथ मैं नाटक करता था. उनकी एक नाटक थी बड़ी चर्चित और बड़ी जानी मानी नाटक थी वो ज़माने में, बटर एंड मैश बनाना, जिसका मैं हिस्सा था. उसमें एक बार हम लोग एंट्री मारते तो पूरा नाटक ख़त्म होने तक हम लोग एग्जिट नहीं मारते. तो 2 शोज़ थे, 3 बजे का और 6 PM का. पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा था वो, तो हमें न्योता दे के बुलाया गया था. तो किसी ने बताया नहीं कि कपूर साहब बैठे हैं. तो हमने एंट्री मारी स्टेज में, मैं देखता हूँ कपूर साहब. मेरी हवा निकल गई. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ना, बिकॉज यू नेवर सीन दिस पीपल एवर. आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ दिस पीपल लाइव. करेक्ट. And you only know of their screen persona and their interviews और टेलीविज़न पे जो आते थे वगैरह, या मैगजीन्स में उनकी फ़ोटोज़ या इंटरव्यूज़ छपते थे, वही देख के पता है. तो आपके मन में ये कुछ और है. एंड व्हेन यू सी देम दैट द पर्सनैलिटी हिट्स यू लाइक यू नो सडनली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. एंड वो शो थोड़ा बेकार गया. अच्छा. हाँ सबके लिए. आई वॉज क्वाइट अफेक्टेड बाय इट. तो मेरी गिग्गी बंद हो गई थी ना, ऐसे हुआ था. 6 o'clock का शो मैजिकल था वहाँ पे. तो मतलब ऐसा चप्पड़ फाड़ दिया हमने कि सब लोग ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया था हमें. But it is because Shashi Kapoor साहब was there. I don't think so, but I think after that we realized that कि हाँ we have to get our act together, कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग देखो मुंबई में आए हैं, यहाँ ऑडियंस में कोई भी हो सकता है. Yeah, of course. तो 6 बजे के शो से पहले बाहर एक प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस होता है. वहाँ पे इट वॉज अ ड्रामेटाइज्ड रीडिंग ऑफ विक्रम सेट्स, आई थिंक किताब से कुछ पढ़ रहे थे, नसीरुद्दीन शाह. तो वो ऊपर से हम लोग अपने इससे बालकनी से देख रहे थे कि हाँ, तो लाइक नसीरुद्दीन शाह इज़ आवर ओपनिंग एक्ट. ऐसे सोच के किया हमने. बट वो मतलब लात पड़ चुकी थी पिछवाड़े पे ऑलरेडी, बिकॉज वो शो खराब गया था. सो वी हैड गॉटन आवर एक्ट टुगेदर. सो नाउ वी आर लाइक कि कोई भी आ जाए, मतलब यहाँ पे हम लोग बौखलाएंगे नहीं. आप ये बताओ कि अगर आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, व्हाट इज देयर अ फिल्टर कि आपको ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ है? No, that really depends on the conversation and how comfortable I can make them feel, how they can make me feel. If I feel that I don't believe that you can say whatever, something that I say might offend them or hurt them or make them feel uncomfortable. ऐसा हो सकता है. Like say for example, somebody with some kind of a disability, or just say like a man who has no hair, has a receding hairline. In the first conversation, if I happen to mention something about the receding hairline, they may not enjoy, they may feel uncomfortable because maybe they are conscious. But once I get to know them, maybe I'm aware of the fact that they are conscious of it. So even if I bring it up, I may not bring it up in a way that will make them feel self-conscious or not bring it up at all. So I have that information from experience. So this is how people interact in real life. ये कुछ special चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं. Our subconscious is always, like my eyes are always reading your face and the micro expressions. And somewhere the algorithm inside is telling you that it's okay to speak to this person. Conscious एक होता है और subconscious होता है. Almost every human being will subconsciously be reading your expressions also.
and your body language. Which is why sometimes we find some people very dodgy. We don't know why. Because your subconscious is like, consciously you're not able to say why. This is interesting. It's a defense mechanism. You want to delve into it a little deeper? This is interesting. Have you felt that with people before? Many people, yeah. In our business, a lot of times, yeah. What have you felt iffy about? Sometimes you just don't know. Like you feel like... Is it the energy? Like, it's... off hai. Energy is behavior. That's what it is, What is energy? Again, your subconscious is reading all those micro expressions. Sometimes you meet somebody and you're like, you're not able to tell consciously why you're uncomfortable. Sometimes you are. Because sometimes some people will try to intimidate you or try to have a higher status than you. Or कि इस रूम का राजा मैं हूँ या रानी मैं हूँ, वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं. वो आप कॉन्शियसली पकड़ सकते हो बिकॉज यू आर फेमिलियर विथ द ट्रोप्स और डिवाइसेस और ट्रिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स. एंड समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रीड द पैटर्न्स कॉन्शियसली, बट योर सबकॉन्शियस कैन रीड इट एंड इज लाइक कुछ तो गड़बड़ है, स्टे अवे और बी केयरफुल. ऐसे होता है. But this surely comes from experience, like this. Yeah, but when I'm not able to consciously also make sense of it, then I get very uncomfortable. Like I want to get the hell out of there, because I don't know if I can protect myself or something bad is going to happen. या कुछ तो हो जाए मैं फंस जाऊँगा. ऐसा लगता है मैं फंस जाऊँगा. Can you quote me an incident from say the industry? Yeah, that you're in, because I'm sure. Sometimes some actors when you meet or some people you meet, they give out that as you. Because you use the word energy, since that resonates with you, they put out a certain energy at that point of time which I can't read. I'm like, I don't know what this person is about. I don't think I feel comfortable around them. And then you find your way out. Okay. Yeah. Are you this Sometimes person? It can be difficult to find the way out. Like if they have invited you. If they have invited you or something, and then you're like, oh shit, okay, this is how it's going to be. Like once a director invited me to their office and just stared at me. I'm like, I don't know what the hell you're doing, man. Like, why are you doing this? It's making me uncomfortable. Like, talk to me about your project, the role or something like that. I didn't know what that person, it was the first time I had met that person. I'd never even seen that person, who's of some reputation actually, who's a good director, who I would have loved to work with. But at that point of time, and who's not known to be a dodgy person, but at that point of time, he just made that. And I was like, it's your space, it's your office, I've come here. You've made me take your shoes off because take my shoes off because that's the decorum you've set for your space. And then you make me sit in a chair opposite you and you stare at me. I'm not okay with that. And I was like, my subconscious was all over the place. I don't know what this person wants from you. So, आप निकल गए थे वो रूम से कि? I can't, no, immediately I can't. So I just have to go through the whole things and I was like, okay, just hold on. And then we talked a little bit about the thing. I felt a little more comfortable and then I was out of that place. And then that never really materialized. In a way, I was glad also that didn't materialize. But then later I got another opportunity to possibly work with that director, but that didn't work out for other reasons. Okay. As I'm saying, I'm not saying that this person I met was a manipulative person or something. I have not heard of that person's reputation to be that. Not at all. And I would say that this person is considered as one of the good directors. But that day what that person did made me feel really uncomfortable and I couldn't tell why that person was doing. Sometimes you can tell. Sometimes you can tell why they're doing it. What is the weirdest thought you've had while you're sitting alone? एकदम weird thought कि अगर morbid thoughts. Like about death, about how, death it's not really suicidal thoughts, but then I can be very emotionally unattached, but think about what is the best way to kill oneself. Wow. Yeah. But it doesn't affect me emotionally because I'm not trying to kill myself, but I'm like, when you hear about somebody doing that, I was like, oh, okay, they used this way, this is what they did, but what could be the best way where you almost, I say, I wouldn't say it's very academically. Just literature wise. And I would say that I know also, like what's the best way. What is the? I'm not it's from, these are things that I wouldn't say. Put out, yeah, okay, fair. For obvious reasons. Wow.
I don't want to be the source material. Kill oneself. Yeah. This is very interesting, Gulshan. I don't know, but I'm not emotionally affected by it. Neither does it disturb me because I can be very detached, and I'm only academically indulging in that thought. What kind of a person are you emotionally? I'm an emotional person. I'm quite emotional. How often do you cry? Last time kab roya tha? Every day almost, because I miss Ira, who was my elder cat. She died in March, and I miss her. I think of her every day, and I shed a tear or two, or at least my eyes get moist at least once a day. And it was a lot more closer to her death. Actually, I was working while she died, and I had to show up to work next day, after her funeral, and it was very tough. So anyway, that's not the subject we're discussing. Yeah. Yeah, but how? So yesterday. Today I haven't, but yeah, yesterday I was crying. What are the type of things that make you emotional? Is it human emotional bonds? Is it a subject close to you? Is it your work? Could be all of them. I remember reading. Your car? Is it a shoe? What is it? I remember reading a script called 8 AM Metro, and I wept at the end of it. And I was in that movie, which is available on Z5 now. So. Okay. And it is, and people have told me also that I made them, they saw my performance. There are some scenes that I perform. It made them cry. I can't take the entire credit because it's also the script and the director who's also the writer, the way they've written those scenes, because that made me cry after reading them. You play any sport? Yes, I used to. I was cricket, football, hockey, volleyball, badminton. Not so good at table tennis. Majorly team sports. Huh? Majorly team sports. Oh. Not individual sports. Yeah, badminton is not really a team sport. You can play it. But I wasn't particularly good at either of them. Perhaps cricket to some extent, because I had the passion like everybody else. And I thought that passion can be converted to... playing for the nation? Yeah, playing for the country. And I very soon realized that you can be very passionate but don't have the skill set. Because that's also really important. Passion, ये मेरा passion है, लोग बोलते हैं ना कि ठीक है. But I also feel that passion से नहीं होता. You need to have the skill set also. You can be very passionate about cricket, which will make you a great cricket fan. तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है. थिएटर बैंगलोर में ना एमेच्योर थिएटर करते थे. They are very passionate about theatre. हर शो के लिए आएंगे, सपोर्ट करेंगे अपने दोस्तों को, और थिएटर भी करेंगे. बट जब वो एक्टिंग करते हैं तो आई एम लाइक पुट ऑफ. आई एम लाइक इनको नहीं आती है, क्राफ्ट की समझ नहीं है. और ये लोग ना ऐसे 30-35 साल से थिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं वेरी पैशनेटली. सो दे हैव द पैशन, दे जस्ट डोंट हैव द स्किल सेट. सो पहले तो मैं जज करता था उनको, फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं है यार, ठीक है. सो देन आई अंडरस्टूड द डिफरेंस कि बीइंग पैशनेट अबाउट समथिंग, मेरे लिए बीइंग पैशनेट अबाउट समथिंग इज नॉट. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट. आई जस्ट डिडंट हैव द स्किल सेट. आई डिडंट हैव द स्किल सेट इन कंपैरिजन टू अदर्स around me in the school team वगैरह. They were way more skilled. But do you think अगर आप time लगाते तो you could have become more skilled? हो सकता था, but I don't think कि ऐसा बड़ा player. I feel कि मैं किसी भी चीज़ पे अगर मैं सही aptitude है, if I work, I can be pretty good at pretty much anything, provided I have the aptitude to consistently learn and put enough work behind it. So yes, sports खेलता तो ऐसा कोई ग्रेट प्लेयर इनहेरेंट टैलेंट तो नहीं था, बट अगर मेरे अंदर वो था आई थिंक थोड़ा सा एप्टीट्यूड, बट वो नहीं हो पाया. करेज तो बिल्कुल नहीं था. तो ऐसे एंड देन व्हाट हैपेंस इज व्हेन सीरीज ऑफ फेलियर्स हैपन कि अब किस मुंह से जाके अपने माँ बाप से भी बोलें कि नो आई वांट टू परस्यू स्पोर्ट, होता है. तो फिर मुझे भी लगने लगा कि ये नहीं होने वाला है, बिकॉज आई न्यू दैट there are the not even the first 11, the first 25 are more skilled and talented than me. तो ठीक है, मैं फील्डिंग अच्छा कर लेता हूँ, बट दैट्स नॉट 12th मैन बनना. बाकी सब पे बहुत काम करना बाकी था, एंड आई डिडंट हैव द टाइम नॉर द आई थिंक एप्टीट्यूड टू डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इतनी समझ नहीं थी ना. आई वाज लाइक व्हाट 14 years old. I want to talk about a little about you, like you mentioned about parenting in between a conversation. What sort of a relation do you have with your parents? And a follow-up to that would be, do you think our parents are always right
in their approach. I want to talk about the generational gap thingy. No parent is always right, and all of us don't know any better. We have to figure it out. There are some strategies that you can employ कि हाँ ये parenting strategies है ऐसे ऐसे, like how to teach the how to like you not put their finger in a socket or touch anything hot. तो अपने बच्चों को ये करने के लिए वो तो लॉजिक किसी को समझाना नहीं पड़ता, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है उसके लिए. बट बाकी सब ना पीपल फिगर इट आउट, एंड इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग ऑल्सो. लाइक माई पार्टनर, शी इज़ फ्रॉम ग्रीस. The way their parents have brought them up is very different to way our parents have brought us up, है ना. So the one thing that really resonates is that physically assaulting a kid, जो हमारे तो पहले सोचते भी नहीं थे, उनके लिए बिग नो नो है कि वो पॉसिबल, वो they get disturbed by how can a parent like हाथ कैसे उठा सकता है, हाथ कैसे उठाना. हाँ, और हमारे यहाँ इतना बिग डील नहीं सोचते हम, क्या ठीक है एक चांटा मार दिया, क्या है मतलब. वो अलग है कि एकदम मारने पीटने वाले माँ बाप होते हैं ना, वो अलग है. दे हैव सम अदर काइंड ऑफ कंडीशन बिकॉज ऑफ विच दे हैव बिकम सो वायलेंट. यहाँ पे तो ऐसा होता है कि अगर मेरे को अगर लग गया कोई चोट वोट आ गई है, बट एज अ किड कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ ये इतना ही करने कि वो दैट ऐसे उंगली उठा, उससे ही कई पेरेंट्स की ऐसी ट्रेनिंग होती है बच्चों के साथ कि ऐसे हाथ उठाएंगे कि उतने में मारना ही नहीं पड़ता वो. बट वे सो आई एम नॉट ट्राइंग टू नॉर्मलाइज फिजिकल assault of children or something. I'm not at all saying that. I'm not advocating. I'm saying that culturally it was not a big deal for us. Now a lot of people would consider that to be a big deal or something like that. So it's an easy example कि European way of upbringing and Indian way of upbringing में क्या stark differences है ऐसे. तो but nobody knows any better. You figure it out. So my relationship with my parents now is that I am looking at everything that I try my best to sort of be there with them because I'm an only child, or I don't live with them. Where do they live in Bangalore. They live in Bangalore, yeah. So in their own house, which I have not paid for. They don't take money from me, and that is the greatest thing that anybody could have done to me. Mm-hmm. Is that allow me to go and pursue my dreams and say that it's okay. And I've had a sick parent. My mother has been sick since 1984, and she's pretty much bedridden now. She never once said, come back, I need you. और जब मैं 2008 में शिफ्ट हो रहा था कि डोंट गो, हमारा क्या होगा, कभी नहीं बोला, ना मेरे माताजी ने ना हमारे पिताजी ने. लग जाओ. पिताजी आई थिंक वंस आई स्टार्टेड डूइंग क्वाइट ओके एंड लाइक अर्निंग मनी ही वाज लाइक हाँ ठीक है कर लेगा कुछ ऐसे. सो आई ट्राई एंड बी देयर फॉर देम. बट ऑफ कोर्स लाइक I had you have a lot of problems with your parents also, and the way they treated you when you were a child and all of those things like that. I am trying to be more understanding and empathetic towards it, saying that if I didn't know any better, how do they know any better? When you understand how they grew up, what was their circumstances and all those things like that, then you it's possible to develop a certain kindness in the way कि हाँ ठीक है. I don't have any. मैं पहले बहुत गुस्सा होता था कि हाँ ऐसे होता था वैसे होता था. I want to forgive all of those things that I was holding against my parents, and I don't have that pain अभी कि ये जब मैं ये साल का था और मेरे साथ ऐसे किया था, आपने मुझे मारा था, ये वो कुछ नहीं. I don't want to delve deeper into what exactly happened, but I want to talk about वो तो private business है मेरे. ठीक है, exactly, which is why I'm just saying that it's possible. I'm inclined to look at my parents with kindness and empathy, and try and understand the situation, put the past behind, because that's the sort of person I have become. Like, I don't care. Put it behind. What do you have? Look after it, so that at least we are happy now, and I'm able to be kind to them. And I'm immensely grateful that they allowed me, despite being an only child, they have not put any responsibility on my head. वो घर चलाने का या उनके health का या कुछ भी नहीं. Both are retired. I want to talk about things जो क्योंकि मैं इस एंगल से इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज देर आर पीपल, देर आर चिल्ड्रन, देर आर टीनेजर्स एंड देर आर लाइक 20, 21, 24 year olds out there, and I'm 28 myself. So there are things that sort of happen with you in your life where you realize that hey, they're not understanding what I'm trying to say, and they're imposing certain things on me. And I don't want to be imposed. I don't want to be controlled. Just because I'm their kid doesn't mean I want to be controlled by anybody.
I have my own life and I want to live my life on my own terms. Yeah. And as far as I'm doing things that are ethical and legal, and things that will not harm anybody else. I should have the full liberty to do whatever I want to do. Yeah. So I'm talking from that lens where any teenager or any 21, 24, 25-year-old has this sort of a generational gap thing where there is a tussle between them and their parents. कई बार झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं मैं तो यहाँ जा रहा हूँ जबकि मैं कहीं और जा रहा हूँ. So why do you think that happens, and in your sort of experience, in your sort of opinion, what can be done to sort of bridge this gap? If you think really don't know, you can contribute to that answer. I really don't know. I don't know what to say. I think you have to find a way, and everybody's relationship. What has worked in your case, rather? In my case, I got a little lucky that my parents, even though they weren't really supportive of it, they allowed me to sort of do it. I think it was a lack of courage from my part that was lacking. Okay. Not a lack of support from them or anything. They were very supportive. So I think I was lucky and fortunate also, and maybe at some level I misunderstood them. Because they never said, look after yourself, take care, पैसों के लिए क्या करेगा, वो सब तो है. But they allowed me to go and pursue my dreams and work in a business which is one of the most volatile businesses. Correct. In the world. कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है. You can go and you can go, or you can be like within a span of like this. हाँ, ये कुछ नहीं है, ऐसे बॉटम में ही रहो, वो भी हो सकता है. तो ठीक है, मेरे कुछ सेफ्टी नेट्स वगैरह सब थे, तो which is I also moved when I was 30, so they had seen that हाँ कुछ तो कर लेगा, है capable है, 8-10 साल काम कर चुका है, कुछ तो आता है इसको, कुछ नहीं तो उसे वापस कपड़े बना लेगा. So I think they had that confidence. They never really said that, but they never questioned me. So, but that was my good fortune, and that was my privilege. And I'm purposefully using this word because many times we forget how privileged we are. We only see other people's privilege who are more privileged than us. So I think we should try and be aware of our privileges. So that was my privilege. I didn't have to support my parents. Instagram पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आजकल? देखो एक बार वॉच टाइम देखो कितना है, कितना टाइम स्पेंड. काफी टाइम स्पेंड करता हूँ मैं. रील्स देखता हूँ. क्या देख रहे हो आजकल? पोस्ट का एंगेजमेंट देखता हूँ. पोस्ट का एंगेजमेंट क्योंकि आजकल प्रचार भी चल रहा है, तो प्रचार. अरे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ते हैं लोग यार. डीएम्स किस टाइप के आ रहे हैं? अच्छे सारे किस्म के आते थे. पहले नंगी तस्वीरें भी भेजते थे, आजकल अच्छा नहीं भेजते. आजकल नहीं आ रहे. अरे मैं प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे सब मैसेज करता था, तो अब बंद हो गया. तो पहले आप ये पिक्चर्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे? वही है कि देखो इट्स वेरी नाइस, आई फील फ्लैटर्ड एंड ऑल दैट, बट देन प्लीज अपनी नंगी तस्वीरें मत भेजो यार प्लीज. लड़के भी भेजते थे. अच्छा आजकल लिबरल. अभी ये सुन के वापस चालू मत हो प्लीज. बट व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? व्हाट इज द साइकिल? अबे रहने दो यार. नहीं एक बार दिखाओ तो सही कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो. वो आप सेटिंग्स में ओपन इंस्टाग्राम, गो टू योर प्रोफाइल, go to the top right. Settings. पता है your activity. अरे बेहतरीन. Gen X behaving like a Gen Z. Time spent 1 hour 34 minutes daily average. Not bad. What would be your Tinder bio? If you were on any dating app, what would be your bio? वही जो मेरा जो सोशल मीडिया पे वही वाला सेम. Versova का Versace. the boss of the cosmos, and मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. ये चुराया मैंने ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली चोरी का है. वर्सोवा का वर्साचे ये ओरिजिनल है, बट वर्साचे मेरा नहीं है. बट दिस इज लाइक आई थिंक टुडे आई एम नॉट सो वर्सोवा का वर्साचे, बट समटाइम्स इट्स द वे आई ड्रेस. मैं वर्सोवा में रहता हूँ और थोड़ा कहते हैं थोड़ा ब्लिंग होता है, थोड़ा एक थोड़ा वो जरी थोड़ा वो पॉलिएस्टर शाइन आता है. तो no, but are you the most posh guy in Versova? Not at all. Who is the most posh guy in Versova? I don't know. But I am Versova का Versace. There are Versova का Gucci. होगा कोई अंधेरी का अरमानी कोई होगा. Is it always has to be कभी A का A B का B? भिवंडी का Balenciaga. It's fun. आप करो, शुरू करो. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. बताओ कहाँ से पूछ रहे हैं? नहीं, but you are not. मैं तो अंधेरी का हूँ. बताओ आप अंधेरी का अंबानी. अंधेरी का अंबानी कैसे? भिवंडी का नहीं, मैं नहीं हूँ अंधेरी का अंबानी. मैं बस अंधेरी का हूँ. नहीं ठीक है. भिवंडी का Balenciaga.
नहीं ऐसे ही हो सकता नहीं, है। let's try, लेकिन no? वर्सोवा का कहाँ तक वर्साचे, चल सकते हैं? अरे बहुत ऐसे, जब भी मैं ऐसे हैशटैग वर्सोवा का वर्साचे डालता हूँ तो नीचे ऐसे बहुत लोग कमेंट्स पे बहुत कुछ, देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी व्हेन इट कम्स टू दिस की। आई एम श्योर, या लेट्स ट्राई इट आउट। मैं एक कैप्शन बना देता हूँ तो वो लोग उससे भी बढ़िया बढ़िया कैप्शंस, कई बार मैं ऐसे कॉपी करके अपना कैप्शन चेंज कर देता हूँ। ये वर्सोवा का वर्साचे ऐसे ही मिला था, सौरभ करके एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो ही सॉ मी वन, आई हैड पोस्टेड अ फोटो एंड ही सेड वर्सोवा का वर्साचे, तो मैंने उधर से चोरी कर लिया। आए अच्छा है गुरु, वर्सोवा का वर्साचे, ये बाबूराव का स्टाइल है, ऐसे डाल दिया। लेट्स ट्राई, नो? अंधेरी का अंबानी, भिवंडी का बैलेंसियागा, सी से क्या होगा? सी से क्या, चेंबूर का कैल्विन क्लाइन। चेंबूर का कैल्विन क्लाइन, ठीक है। लेट्स गो विथ दादर। दादर का बाइकला का बालमेन, हाँ बाइकला का बालमेन। दादर का दादर का डॉल्चे गबाना। डोल्चे गबाना। ई से क्या एरिया का नाम है बॉम्बे में? एलिफेंटस्टन। हाँ। एफ। ए बस कर गुरु। नहीं, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम श्योर ऑडियंस को इट विल बी लाइक अ ब्रीदर। क्या ना, मैं तो इधर फालतूगिरी करने आया था, लेकिन तुम ना ऐसे गंभीर ऐसे बातें करवाने लगे, अब तुम फालतूगिरी कराना चाहते हो। आप फालतूगिरी के लिए आए तो मैं फालतूगिरी करा रहा हूँ आपसे। एफ पे आ जाओ। एफ, हाँ एफ से कोई जगह का मैं तो जानता ही नहीं ज़्यादा बॉम्बे के बारे में। अहमद भाई बताएंगे। एफ बॉम्बे ही नहीं कि कहीं, हाँ फरुखाबाद का फेंडी। फरुखाबाद का फेंडी। उसमें है फरुखा, कौन है तू? मैं फरुखाबाद का फेंडी है। हमारा टोपी सीधे गया ऐसे। को ये बहुत अच्छा लगा। गोरेगांव का गुची। पता नहीं, एच से करो। नहीं, मैं आप अब मैं चाहता हूँ कि आप करो। मेरे को लगता है यू हिमाचल का ललमुट लाइन। ठीक है। आई आयरलैंड का इसी में आके। पता नहीं गुरु ऐसे। जे से क्या? जूहू का हाँ जूहू का जे बॉल्विन। हाँ जे बॉल्विन तो वो ब्रांड है। जिमी चू का जिमी चू, करेक्ट। जूहू का जिमी चू। देख क्या है ना, अभी और लोग देखे वो, ये देश में पोटेंशियल है, भारत में इतनी ऐसे क्रिएटिविटी भरी हुई है। फालतू में हमारी उस्तादी है। नहीं आप बिल्कुल, तब तो ये अपनी मतलब जोड़ी है फिर। भारत के लोगों का मैं बता रहा हूँ, उसको कभी कभी थोड़ा चैनलाइज करके कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी चैनलाइज करना चाहिए। व्हाट इज योर टेक अबाउट द एंटायर बॉलीवुड आउटसाइडर एंड नेपोटिज्म? ओके, मैं थोड़ा इधर से अटैक करता हूँ उसको, सीधा जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आ जाओ, जैसे लेना ले लो। 99.99% लोग जो इस शहर में आते हैं कुछ सपने लेके कि ये बनेंगे वो बनेंगे, वो सपने कभी साकार नहीं होंगे। शायद आप घर खरीद लेंगे, या पैसा ठीक ठाक बना लो, या एक ठीक ठाक करियर बना लेंगे, या सक्सेसफुल भी रहेंगे, लेकिन जो आपको चाहिए था, ये सोच के आए थे कि ये, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ। जो साल मैं आया 2008, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप पूछेंगे सच बताओ क्या बनने आया हो, बोलते थे शाहरुख खान। शाहरुख खान बनने आए, नहीं बने, कोई भी नहीं बना। सो ये रियलिटी है, ये आपके सबकॉन्शियस को पता है, आप कॉन्शियसली आप इससे रियलाइज़ नहीं किया आपने, तो आपको इन चीज़ों से दिक्कत होगी जो आपको नहीं मिल रहा है। जिनको आपसे ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो आपको लगेगा कि ये एक जेलसी भी है, एंड यू ऑल्सो फील दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि शुड हैव बीन मी, बिकॉज वी ऑल लाइक टू थिंक दैट वी आर बेटर देन द अदर पर्सन। बट इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शंस। आर्ट्स में मेरिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो मेरिट। और जो मेजरेबल चीज़ें हैं वो भी बहुत फॉल्टी हैं, जैसे बॉक्स ऑफिस का सक्सेस, पैसा कितना कमाया, सब पे लागू नहीं होता, एक दो लोगों पे वो स्टिक करेगा, वो भी इट्स नॉट एन एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर। वो भी परसेप्शन क्रिएट करता है कि हाँ ये स्टार है, ये स्टार नहीं है, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है, ये मिड टीयर है, या ये व्हाटएवर। कुछ लोग बोल देते हैं ना ए ग्रेड बी ग्रेड, ऐसे बोल देते हैं, सब परसेप्शन पे बेस्ड होता है। इस चीज़ से हमें डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस को पता है। इसीलिए जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो जो पावर सेंटर्स होते हैं उनको जाके हेलो बोल के आते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट देम टू हैव अ गुड परसेप्शन एंड गिव अस वर्क और अपॉर्चुनिटीज़। हमको क्या चाहिए होते हैं? एन अपॉर्चुनिटी। तो ज़्यादातर 99.99% ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, बट ज़्यादातर लोगों जो लोग जहाँ आते हैं, एक्टर्स
जिस लेवल का सक्सेस वो फैंटेसाइज करके आते हैं वो नहीं मिलने वाला है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रिपेयर टू डील विद इट. तब आपको यू प्रोजेक्ट दैट ऑन एनीथिंग दैट यू फील इज मोर सक्सेसफुल देन यू. सो ये नेपोटिज्म इज एन ईजी टारगेट. इट्स नॉट लाइक नेपोटिज्म डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर. इट्स प्राइवेट एंटरप्राइज यार. वो अपने पैसे से प्रोड्यूसर किसी को भी लेके बनाए. गवर्नमेंट का जॉब नहीं है ना कि यहाँ पे आरक्षण है, इतना आपको इतना देना पड़ेगा, बाकी मेरिट पे लेना पड़ेगा. नहीं है. कोटा सिस्टम नहीं है इधर. तो क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड व्हाट इज नेपोटिज्म? देयर इज अ प्रिविलेज अटैच टू दैट. इसीलिए मैं इससे पहले आपको बोल रहा था कि मैं अपना प्रिविलेज पहले याद कर लूँ. क्या है? मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं यहाँ आने से. हालांकि मेरी मदर की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है. शी नेवर सेड कि डोंट गो. दैट इज़ माई प्रिविलेज. मैं वो घर नहीं चला रहा हूँ उनका. दैट इज़ माई प्रिविलेज. सो मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रिविलेज. दे आर ओनली अवेयर ऑफ द प्रिविलेज दैट अदर पीपल, मोर प्रिविलेज पीपल, एंड दे कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं होने वाला अपना. इट्स दैट नेगेटिविटी, इट्स दैट एंग्स्ट. इसको हार्नेस करते हैं कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए जब जब ज़रूरत पड़ती है. तो यही हुआ था जब कुछ साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे ये सब एंग्स्ट हार्नेस हुआ था. और हम इनहेरिट भी करते हैं. जब हम यहाँ आते हैं तो ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द वैसे ही लोग होते हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यू एक्चुअली डिज़र्व बेटर, बट इट विल गो टू देम बिकॉज दैट हैज हैपन टू देम ऑल्सो. इतना सब्जेक्टिव मीडियम है यार आर्ट्स. कैसे किसी चीज़ को मेजरेबल, तुम बताओ कैसे मेजर करोगे किसी चीज़ को? हम ये फ़ोन को देख रहे हैं. We both have our opinions about this phone. How will you measure it? How will you measure anybody's talent? Looks. Beauty pageant इसीलिए pageant होता है वो. Sport नहीं है. It's a pageant because your idea of beauty can be completely different to my idea of beauty. और culturally भी हमने भी देखा है कि it's very different. Sometimes certain cultures, remote cultures जिनके बारे में idea ही नहीं है हमको, उनका beauty standards बहुत अलग होता है जो हमारे लिए ताज्जुब की बात होती है. बिकॉज दिस थिंग्स कांट बी मेजर्ड. इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है बिकॉज नाउ यू आर इन अ फील्ड वेर यू कांट कंट्रोल रिजल्ट्स. वो एहसास होता है ना, वो डरावना एहसास है. पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट because it is a game of perceptions. Do you think they project it on other things because they themselves They're are not getting projects or not successful? Yeah, it comes from disappointment, resentment, and to some extent possible in some people through politics. That is the political nature of the business also. There is favoritism, and nepotism is one thing. There is favoritism. Good होता है लोगों का, but it's all based on perception. Like, you know, I may be more inclined to give you a job because I know you, I like you. And maybe you are very talented also, which is also one of the thing. But do I absolutely know if there is somebody who's more talented than you? I don't. But do you think whoever is, say, at a position of power who is giving you that particular role or that particular, say, job for that matter, would they do it at the cost of talent? I don't know, but they're free to do what they want. I'm just saying that वो से रेल मंत्री तो नहीं है ना कि ऐसे जॉब्स दे रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ कि I'm just trying to have that conversation जहाँ पे मैं ये डिसाइफर करना चाह रहा हूँ कि अगर वो भी पैसे लगा के अपना किसी को काम दे रहा है and people are tagging that as favoritism, he or she, whoever is putting in the money, they would not want to invest that money on somebody just because it is favoritism and sacrifice the talent aspect of it. Losing cause पे कौन पैसा लगाएगा? Correct, of course. And even अगर लगा भी रहे हैं तो उनका पैसा है. wherever क्या उन्होंने फाइनेंसर से लिया है, लोन लिया है, घर गिरवी रखा है, उनका हेडेक है गुरु. तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? What is tickling your? The thing that I explained before is exactly what is tickling your. Somewhere you know that तुम्हारे हाथ में नहीं है. You can only control perception to a certain extent. Beyond that, it's out of control. ये subconscious को मालूम होता है. We just can't accept it completely, which is why we'll find problem कि ये उनकी गलती है. मैं अनसक्सेसफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया. मैं अनसक्सेसफुल हूँ क्योंकि ये सब स्टार के बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है. That's why, because you can't accept the nature of this business, that there is no merit. Merit cannot exist in the arts. संगीत हो या anything in the arts, merit cannot exist. एक किताब लिखी किसी ने, मेजॉरिटी कंसेंसस हो सकता है. हमको एक्चुअली क्या चाहिए? मेजॉरिटी कंसेंसस. देयर इज नो मेरिट बट यू कैन हैव मेजॉरिटी कंसेंसस. उसके लिए क्या चाहिए होगा?
वो भी परसेप्शन बेस्ड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव हैड दिस लाइक भाई मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, पीपल हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस, ओनली देन यू विल बी कंफर्टेबल एंड यू विल नॉट बी वेट डाउन बाय दोज प्रेशर्स, बिकॉज इट बट इज माई पॉइंट गुलशन इज कि जैसे whoever is sort of trying to be a part of the industry, whoever is say for example doing TV or web shows and want to become a part of the industry of sorts where they're doing like major commercial Bollywood films, जब वो इस इंडस्ट्री में घुस रहे थे they had complete idea of the industry, right? I don't they know. had complete idea. I'm guessing so कि उनको I पता don't है think कि so. Okay. Because I didn't know, na? Like I didn't grow up in this environment, so a lot of things I had to understand. For example, public relations, PR, how to use PR to my advantage, or how should I use it, what is my perception of it, how is it useful for me, is it not useful for me. Many people do it because हाँ सब लोग करते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम पे चीज़ों को बेचते हैं, हाँ करते हैं, मोनेटाइज करेंगे, बट देन it's only after a point that people start thinking that this is this thing that I really want to do or how I can do it. एक कुकी कटर सिस्टम होता है, सब लोग हाँ इधर करो, इधर इंटरव्यू कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आप ये एयरपोर्ट लुक्स कर दो या पैप्स का फोटो कर दो, सब लोग कर रहे हैं. But how much of it is really useful for you? How much of it is authentically coming from you because you've understood the medium and why is it important, how is it important, how much is good for you and how much is bad for you. ये समझ तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आता है. So this is just one example. There are various other aspects of the business, like the theatrical business, the business of theatrical release, which most people have very little idea of. Because that's something that can affect your perception, right? Like agar aapki film, for example, some genius who's actually a moron decided to publicize collections as a metric of success. अब फंस गया ना गुरु उधर, सब लोग एवरीथिंग इज मेजर्ड बाय कि ओपनिंग कितना लगा, बट नोबडी इज सीइंग कि अगेंस्ट हाउ मेनी स्क्रीन्स. आपकी फिल्म है जो 20 लाख रुपए कमाई है, बट 50 स्क्रीन्स पे रिलीज है, विच इज़ प्रीटी गुड स्ट्राइक रेट. अगर 20 लाख कमाई है 1000 स्क्रीन में है, दैट्स 30. बट इतना तो कोई नहीं सोचता ना, सिर्फ फिगर ही देखता है ना. 20 लाख. अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि यू हैव टू मेजर इट अगेंस्ट हम व्हाट इज द साइज ऑफ द रिलीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फिल्म. बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन तो होता नहीं है, बट यू हैव टू, बिकॉज आई एम लाइक नो दिस कांट बी लाइक आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन. तो मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है, इसलिए मैं ढूंढ निकालता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ. बहुत सारे लोगों को नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, बट देन दीज थिंग्स कांट बी लाइक ऐसे कैजुअली आप ये नहीं सकते. बट अनफॉर्चुनेटली हो रहा है ऐसे, इसका इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल. बट माई सक्सेस और फेलियर विल ऑल्सो बी मेजर्ड अगेंस्ट दिस. आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. Last question before we let you go. I want, and I know you've discussed this a number of times, but I still want to get your thoughts on it. Which is how does divorce affect a man? And what's your relationship with your ex-wife now? I am dating my ex-wife right now, so it's really good, and we are having a wonderful time. And we still live in separate houses, but we spend a lot of time with each other, and we've been dating each other since June. And Since June last year. June last year. June last year. तो 1 साल हो गया almost. So divorce was difficult for both of us. It was very difficult for her, and it was very difficult for me also. Since you asked how it was for me, so we'll talk about how it was for me. I never thought that in my life I'll get divorced. I didn't. But I started to see that this was probably the best way for us to save all the good things that we have, that we cut off a branch so that we can save a tree. I've used this analogy many times. And it totally makes sense for me also. हमने पेड़ बचा लिया टहनी काट के. सो अभी पेड़ है, अभी आई थिंक और टहनी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है फ़िलहाल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम दोनों ने मिलके पेड़ को बचा लिया. सो एंड इट टुक एफर्ट, इट टुक टाइम टू सॉर्ट ऑफ हील फ्रॉम ऑल द वुंड्स दैट वी हैड, फ्रॉम द नेचर ऑफ द हाउ द रिलेशनशिप हैड, हाउ इट सॉर्ट ऑफ अनफोल्डेड.
We didn't know any better, both of us. We tried, both of us, we tried really hard to make it work, and it just became that sometimes. It just became hard work, and it wasn't really fun. It wasn't really working. So I think cutting off that branch was inevitable and the best decision. And which is why we are able to be in the space we are right now. Okay. What are you looking for right now? Nothing really. I'm not really looking forward to anything. We are definitely wiser and more learned from our past experiences. And we are more conscious of not repeating them, because when we do see those patterns, we are able to identify it by ourselves sometimes. And our circumstances are also very different. Our understanding of life, our ability to deal with matters outside of our relationship that sometimes has enormous effect on your relationship. Those are also factors. We both are better at navigating at those. So a lot of times those things don't really affect our relationships. Mm-hmm. So वो सब है. I used to be a very self-conscious person. So I also started to realize that I need to get over that if I have to do anything in this business. I can't be self-conscious. I mean, I can be, but then I have to, like right now I'm sitting with you and I'm trying to be as authentic as possible. This is very important, to be comfortable in this world. So, and I was obsessed by that. So what happens is that then you don't have time for other things. You're consumed by other things. So, and she had her own set of things to overcome. Culturally भी था, क्योंकि वो अलग culture से, अलग माहौल में पली बड़ी. The standard of living for most European middle class families is very different. They have much better public transportation, just to mention one thing. So ये सब है कि a place like India and particularly Bombay can be very challenging. Not only for me, but definitely much more for her. Those also affect relationships. Because if you're not happy in the place where you're staying, then you're like that affects your mood and that affects your relationship. We are better at navigating those. What, according to you, what does it take to run a successful relationship? I've been divorced once, so I don't know if I'm the best person. No, I don't want to touch that, but whenever you met her. I'll tell you what I think, at least what I'm doing. Being able to effectively communicate is very important. That is something I think we lacked, and I think a lot of people that I know who have had bad relationships or had trouble in their relationships also, that it's difficult to keep it fresh also all the time. It does become dull and boring after a while. But how do you keep it interesting? And communicating is very important, and many times we don't. We expect the partner to understand, whereas we ourselves don't understand many things about them. So I think it's very important to be open and communicative, and an ability to negotiate. It's also a partnership. So you have to be willing to negotiate with each other. So to put it simply, kabhi tera, kabhi mera. ये भी अगर करते रहेंगे तो it creates balance. At least my relationship lost a sense of balance because it tended to get one-sided, either her side or my side. And then when it's too much of her side, then I start to feel, अरे सब choice तुम कर लोगी तो फिर मेरा क्या? So and at the end of the day, it's hard work. Like it is partnership, and it is possible for some relationships where one of the partners will say, yeah, you take care of this. ये दीवार पे कौन से फोटो टांगने हैं, इस पे मेरे को जाना ही नहीं है, जो भी करना है कर लो. ऐसे भी होता है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप ऐसे नहीं था, because we are both creative people. We want that agency. Both of us want. So you have to find the balance, and you have to be willing to negotiate. It's effort, like it's a diplomatic effort, process. Putting in effort every when you single get day. used to it, it doesn't become effort. पहले तो effort लगता है because we are not used to doing it. Okay. Then you have to practice it like how you practice a skill. So then it becomes easier. Then you also see that it's bringing some stability and balance in your relationship. And you recognize also that the other person is allowing you that space. ठीक है, I would have wanted this painting over there, but ठीक है, ये भी ठीक है मेरे लिए, since you like it. So then you appreciate the fact that they are accepting something of yours. It keeps balance. I don't know, because there are socio-economic divides also among us. So I don't know, because I belong to a certain section of society. So this is my experience. But
how this is applicable, or how will it like bubble up or trickle down to people at various other parts of society, I don't know. Okay, I'm sure. Yeah, I just want your take on things, which is fair, Yeah. which is something that I wanted, and I'm sure the audience and the listeners We all have it. suck at communication. I feel that's something that really plagued my relationship also, from both sides, from her and me. That many times, at least while doing work with a therapist, that's what we discovered, that we have to find better ways of communicating with each other, how we feel, what are our needs. Interesting. Thank you so much, Gulshan, for being a part of the show. Pleasure, man. Cheers. And you can do the outro on this camera. This is for you. After the Bad outro. Cop. Yeah. Hello, everybody. I am Gulshan Devaiah. Sometimes I'm also Karthik Aryan, but there is an S in my Karthik which is silent. And Fremantle India presents Bad Cop by Aditya Dutt, showing on Disney Plus Hotstar from the 21st of June. Check it out. It's an entertaining show. Hopefully you'll have fun. The trailer and teaser have been received really well, and people have left a lot of wonderful comments. So in case you have any doubts, you read the comment section, and then, I don't know, maybe if you don't want to be one among the crowd, then you can just write your own opinion. If you have a bad opinion, just stick it where the sun don't shine. If you have a good opinion, share it with everybody. All right. See you at the movies. See you at the movies. Thank you so much, Gulshan, for being a part of the show. For the audience, please watch The Bad Cop on Disney Plus Hotstar. And every Friday we come up with a new episode, so stay tuned to this. You know the drill. Like, share, subscribe. I'm going to link Gulshan's socials in the description. Please go check him out. Instagram, I don't care. Facebook, Twitter. I don't care if you follow me. Tinder, Bumble, everywhere. That's the drill. But thank you so much for being on the show. Gullu. We'll stick to that. See you guys next Friday. Thank you so much for watching. Cheers, man. Thank you so much.